Hello, welcome everyone. Welcome to Odisha Civils. I'm your Ashutosh Sir. ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ହେଇଛି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଏଇଠି ଆରମ୍ଭ କରିବି ଆଜି ୟା ଉପରୁ ଆମେ every week ରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ୟାକୁ will process on this one that is for geography optionals. See, geography optionals ର first of all मैं कहबी कि the offline batches already तो start ହେଇଛି last few years of এটা होची UPSC and OPSC both, but online ପାଇଁ the batches has already started few days back, right? So जो जेहेतु it's an very scoring optional, so for हम निज राज्य रे मोर ओडिसा रे यार जो क्लैरिटी बिकॉज स्कोरिंग पेपर इन द सेंस ऑफ दिस एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट तो साइंटिफिक सब्जेक्ट रो स्कोर बेसी तो ऑफ कोर्स आपरे आज भी कहबी लास्ट पड़ को बट बिफोर दैट वन सम कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो थ्री की समस्त गोटे रहिबो कि व्हाट अबाउट दिस सब्जेक्ट एंड व्हाट इज द अप्रोच सब सब्जेक्ट रे किछि भी माने कष्ट न थाए द जिंस हला कि हमकर अप्रोच आर नजरिया सेटा को जदी हम जानि जे इफ यू नो द वेज एंड द ट्रिक्स द डेफिनेटली इट विल बी इजियर फॉर अस. सो लेट अस नो आज गोटे बढ़िया टॉपिक आनछि which is very much relevant for your OPSC and UPSC. Basically that is jodi discuss kar that is your continental drift theory. Continental drift theory is one of the jodi ame geography optional syllabus dekhiba OPSC ho ki UPSC ho, it is one of the most favored questions हुआ जाए केमती क्वेश्चन ऊपर हमें अप्रोच नबा that is a major concern ला बहुत इजी खाली हमर जानिबार अछि. अच्छा बहुत जिंस आ भितर आज मु कहिबी ठीक अछि. क्वेश्चंस फोटो तुम देखु एटी डायनासोर फोटो एटी योर फुलर चित्र. सो आज एसे जिंस डायग्राम्स ऊपर आज हम डिस्कस करिबा. सो लेट्स प्रोसीड फॉर दैट वन. बेसिकली कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जदि हम देखबो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जदि हम देखबो कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज बेसिकली जियोमॉर्फोलॉजी अंडर रे आछि. जियोमॉर्फोलॉजी गोटे सब्जेक्ट जोटा अछि हमर जियोमॉर्फोलॉजी अंडर रे ही कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ता कवर हुए. ओके ओके नेक्स्ट देखिबा कौन कौन कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जदि हम देखिबा दिस इज वन ऑफ द जो जदि प्लेट टेक्टोनिक्स जो आसिला हमर हाउ द कंटिनेंट्स आर मूविंग तो से हिसाब रे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी 1924 मसिया रे जने वैज्ञानिक मेट्रोलॉजिस्ट जर्मन मेट्रोलॉजिस्ट इज अल्फ्रेड वेगनर से ही प्रथमे कहितले कि नाही कंटिनेंट्स आर ड्रिफ्टिंग. ओके लेट अस नो about the Wegener. He is the person of Alfred Wegener. He is the man who was behind this idea, this continental drift theory, Alfred Wegener. Alfred Wegener जदि हमें देखिबा Alfred Wegener जने German your meteorologist थिले and he is also the geophysicist also, right? So he was the person who told behind that yes continents are drifting. यही प्रथमे कहितले कि yes continents are first जदि हमें देखिबा कि he is the first person who said it that continents are drifting. First यही कहितले that continents Alfred Wegener continents are moving, right? Continents are moving प्रथम यही कहितले कि first तो he was जदि देखिबा कि he was first who encounter many criticism and over criticism कहइतले कि how a person is telling that continents are moving. Okay, but yes after few years when the plate tectonics theory propounded sei samare kon hela ki the Wegener theory was supported though at that time Wegener was not there. So Wegener contribution was immense. एई भलिया क्वेश्चन जतले तमर पढुची देखो वेगनर थ्योरी थ्योरी जोटा थ्योरी ऊपर हाइपोथेसिस और थ्योरी भीतर बहुत फरक अछि. हाइपोथेसिस हला इट्स एन ओनली एन सजेशन बट थ्योरी जदि हमें देखिबा थ्योरी हला तमर एस्टैब्लिश एग्रीमेंट विथ सर्वे रिपोर्ट, राइट? सो वेगनर थ्योरी ही वाज डन ए मार्वेलस वर्क. अल्फ्रेड वेगनर मार्वेलस वर्क ही विजिटेड मेनी कंटिनेंट्स. ओके सो एटा हमें देखिबा केमते अप्रोच रहिबो हाउ ही प्रोपाउंडेड हिज थ्योरी एंड एस्टैब्लिश्ड हिज आर्गुमेंट. अच्छा अब अल्फ्रेड वेगनर भीतर यदि कहबो he was the first person who told about that Pangaea and Panthalassa. First person who told about that Pangaea and Panthalassa. से कौन कहले this is Pangaea, existence of also Panthalassa, right? Panthalassa देखो ऑप्शनल रे सबटु बडो जिंस बुझिबाटा हमर कि कोनटा हमें लिखिबा को पॉइंट रे काहे कि ना एठी भी सेम जिंस जेमति तमर जीएस लिखछो एठी भी सेम जिंस वर्ड लिमिट इज देयर.
वाट लिमिट रे तुमको प्रथमे मैक्सिमाइज करिया पड़ियो को जिंसटा हमें बेसी फोकस करिवो लिखिबा परे जेमते एठी हमें देखिले कि मु कहली पांजिया व्हाट यू मीन बाय द पांजिया पांजिया मींस द लैंड मास वेगनर कोन कहतले पांजिया इज द लैंड मास इज सराउंडेड बाय water body hela panthalassa this is your water body right panthalassa this is your Pangaea and water body this is your ocean basins and this is your land mass so Wegener was the first person who told about that your Pangaea land mass is surrounded by your water bodies hela agu dekhiba kon hitla Wegener he first person who told about during the Mesozoic era this Pangaea has broken off Pangaea ta broken off just look at the map here again hela Wegener he first je ki kahitile ki no the Pangaea was broken off during the Mesozoic era kota eti dekho this is your dekho Pangaea ti broke out hela during the Triassic period mane kota this is your Mesozoic era देखो ऑप्शनल जदि तमे मु एठी कहिबी काहे कि जदि तमे सबिंदर सिंह तमे पढुछो इफ यू गो फॉर द सबिंदर सिंह इज द फिजिकल ज्योग्राफी जोटा ऑप्शनल रे हुआ जाय कि नो इट्स वेरी मैंडेटरी टू गो फॉर द सबिंदर सिंह आई डोंट डिनाई दैट वन बट सबिंदर सिंह रे तमे जदि पढिबो Continental Drift Wegener it is all about the near about 12-15 pages and that to be इत्ते छोट छोट मिंजी मिंजी अक्षर so class रे बुझिबाटा बहुत इंपोर्टेंट हला और प्लस डायग्रामेटिकल ज्योग्राफी इज अ साइंटिफिक सब्जेक्ट और बहुत ही स्कोरिंग मु तुमको आज भी कहबी किछटा स्टूडेंट्स को शेयर करबी दोज हु स्कोर्ड मोर देन 400 एट अ टाइम गोटे टाइम रा प्रति वर्ष से माने 300 350 ऊपर को रखुछन सो नथिंग इज इम्पॉसिबल आमे चाली न जानी बाटर दोष आमे निजे जानी परिबानी किंतु कहबा कि नाही हेई परनी आमे लेखुनु मार्क मिलली नो इट इज एब्सोल्युटली नॉट सो लेट अस नो द ट्रिक्स और समस्त एनी एवरेज ब्रेन कैन डू ओके सो वर्तमान एटी हम कोन देखिबा कि वेगनर फर्स्ट सेड इट कोन लिखले वेगनर first said that Pangaea had broken माने जो लैंड मास का had broken during in Mesozoic era Mesozoic era माने कोटा खास करके आज की 200 मिलियन इयर्स बैक जदि हम देखिए Mesozoic era माने द एरा ऑफ डायनासोर को जाए Mesozoic era एटा मन रखो प्रीलिम्स रे जदि पछरियो द एरा ऑफ डायनासोर इज कॉल्ड द Mesozoic era राइट सो एठी हम देखले कि ई जगह Pangaea ब्रेक ऑफ हला Pangaea had split up हला स्प्लिटिंग ऑफ Pangaea ठीक अछि Pangaea splitting of Pangaea ई समय ब्रेक करथिला तो वेगनर को कथा के विश्वास करन तकले Pangaea ब्रेक कला यस सो आज इज टुडेस कंटिनेंट देखिबो इट इज द अरेंजमेंट बिकॉज़ ऑफ दिस अरेंजमेंट दैट कंटिनेंट्स आर मूविंग Wegener at that time was propounded yes your continents were moving and today's arrangement is because of or is due to the motion of the your drifting mane motion मन रखो drifting माने कौन motion drifting of the continents drifting means your motion so Wegener established that one आगु देखियो आहुरी कोन Wegener कहितले को जिंस ऊपर Wegener कहितले नेक्स्ट जदि हम देखियो जदि आजिकार अरेंजमेंट तमे देखुचो दिस कंटिनेंट इज योर अफ्रीका राइट दिस इज योर अफ्रीका राइट और दिस वन इज योर साउथ अमेरिका सो वेगनर टोल्ड अबाउट दैट आजिका डेट रे जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका रा अरेंजमेंट इट वाज जस्ट लाइक एन जिक्सॉ फिटिंग रिमेंबर दिस वन he told about the present continent arrangement that is jigsaw fitting once upon a time he told that केमती प्रूफ कले कि कंटिनेंट कौन कहले से कि आगुर गोटे मांस पिंडुला भलिया थिला दैट इज कॉल्ड अगेन मोटी रिपीट करछे इट वाज एन Pangaea वाज द लैंड मास गोटे जगह सब एकाठी हेकी थिले तापरे ड्यूरिंग Mesozoic era सेटा स्प्लिट अप हला he said that Pangaea had broken off हला broken केबे ड्यूरिंग Mesozoic era इट स्प्लिट हला आज जदि हम देखिया प्रेजेंट अरेंजमेंट एटा तमे अफ्रीका देखुछ एंड हियर इट इज योर साउथ अमेरिका okay they have been drifted apart miles 1000 miles apart heichen samane parasपर to दूर रही heichen कि साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका एंड जस्ट लुक एट द मैप jigsaw fitting your Alfred Wegener said that he no once upon a time this there is your South America and Africa were close together right and this was the arrangement was jigsaw fitting तमे यदि देखिबो this coast is your Brazil right भला तमे मैप रे देखो ब्राजील रो
आउ कांगो एपटे हला गल्फ ऑफ गुइनिया हला ए पार्ट हला अफ्रीका रा दिस इज योर गल्फ ऑफ गुइनिया ए पार्ट को तमे जदी मार्क करिवो एटलास रे देखला परे तमे अरेंज करियो तमे देखियो जेंति फिट हे जो तो कौन है वेगनर कौन कहले वेगनर या कहते एटा ब्रेक हला पर दीटा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर दीटा तमरो लैंड मास क्रिएट हला कोन अलगा है कि दैट इज योर लॉरेशिया और अंगारा लैंड ताको कहले अंगारा लैंड एंड तळे हला कि गांडवाना लैंड मन रखो लॉरेशिया और गांडवाना लैंड लॉरेशिया गांडवाना लैंड रे केमते रहला एटी अरेंजमेंट करिवो दिस इज योर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एटा सदर्न हेमिस्फीयर रहला गांडवाना लैंड आउ एटा हला तमरो मझी रहला इक्वेटर दिस इज वेरी इंपोर्टेंट आउ ऑप्शनल पढ़ला बेले भी क्लास जेतले जो जिंसो भी सिथरे भी मु हाईलाइट करिवि कि को जिंसो तमरो प्रीलिम्स पई बहुत इंपोर्टेंट बिकॉज़ मन रखो ऑप्शनली सेते बेले तमरो रहिबो व्हेन यू आर एलिजिबल for the mains means that means when you clear the prelims so that is what whenever you study the optionals you should first notified which is more important for the study means I mean for the clearing the prelims कहीं मैंने कहली अंगारा लैंड और गांडवाना लैंड विषय में कहली नाउ केम टू नो दैट वन वेगनर कौन कहले कि जेतले स्प्लिट हला पर कौन हला पांजिया ब्रेक ही हला कौन हला अंगारा लैंड एंड गांडवाना लैंड अगेन द कॉन्टिनेंट्स से ये भी कहले को कॉन्टिनेंट अंगारा लैंड रे आछुंदी और को कॉन्टिनेंट तमरो गांडवाना लैंड रे आछुंदी हला अंगारा लैंड एठी सॉरी एठी अंगारा लैंड राइट से कहले गांडवाना लैंड रे सदर्न हेमिस्फीयर गांडवाना लैंड रे वेगनर सेड इट गांडवाना लैंड रे को कॉन्टिनेंट्स आर कमिंग जेमती योर अफ्रीका नोट करनिया समझते वेरी इंपोर्टेंट एगुडा सब प्रीलिम्स पई भी प्लस इथरे बुझिया पई भी केमती तमे रहबे को पॉइंट मेंशन करिवो अफ्रीका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया इंडिया माडागास्कर इंडिया माडागास्कर अच्छी माडागास्कर देन अंटार्कटिका देन योर अंटार्कटिका एटा तमरा गांडवाना लैंड रे मिला सपोज आकु मु दिली ए दिस वन इज योर ए हला तमरा अंगारा लैंड बी हला तमरा गांडवाना लैंड सो गांडवाना लैंड हम बी नेले ए रे कोन रहइबो देन योर जदी हम नेबा योर अंगारा लैंड रे अंगारा लैंड रे के रहबो प्रेजेंट डे रे नॉर्थ अमेरिका यूरोप और मेजर पार्ट ऑफ एशिया एशिया रे भी बहुत गुडे पार्ट रहइबो कोठी योर अंगारा लैंड रे बट इंडिया रे तमे देखबो इंडिया तो वर्तमान सर एशिया रे आसी यस इंडिया जदी तमे देखिबो सेही समय रे हमरो गांडवाना लैंड रे थिला जस्ट लुक एट द मैप हियर जस्ट तमे जदी देखिबो एई जगह रे देखो एडी गांडवाना लैंड इंडिया से दिस इज आवर इंडिया ए जो देखु छै छोटियाटा दिस इज योर इंडिया आ इटा देखो साउथ अमेरिका अफ्रीका दिस इज योर ऑस्ट्रेलिया एंड दिस इज अंटार्कटिका आ इंडिया सिटी आ माडागास्कर छोटियाटा सो ए हिसाब रे क्वेश्चन पचरचुंदी ए जिंसरा सो मु कहया कथा एमिति पाठ पढिबा जेमते हम प्रीलिम्स भी ताको कहि पड़थवा बहुत आराम से प्रीलिम्स भी मेंस रे भी हम लिखि पड़थवा आ इंटरव्यू रे भी कहि पड़थवा सो दैट इज व्हाट इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन योर सिविल सर्विस एग्जाम्स वेदर इट इज ओपीएससी और यूपीएससी राइट हाँ ऑप्शनल सिलेबस जदी हम देखिबा कि ओपीएससी रे के कम अछि राइट सो अगेन मु आज कहिबे और भी नेक्स्ट તમે देखु छ पर्मियन फेज व्हिच इज योर नियर अबाउट 225 मिलियन इयर्स अगो 225 मिलियन इयर्स अगो एठी जदी देखु तो ट्रियासिक पीरियड इट इज नियर अबाउट जोटा कि मेसोजोइक एरा रे दैट इज 200 मिलियन इयर्स अगो देन जुरासिक दिस इज आल्सो 135 दिस इज आल्सो a part of मेसोजोइक एरा नेक्स्ट योर क्रेटासियस दिस इज आल्सो ट्रियासिक जुरासिक क्रेटासियस ए माने समस्त मेसोजोइक एरा ए तीनटा जो रहउची 1 2 3 एमे तीनटा संख्या ले तमरो दिस वन योर दिस वन एंड दिस वन ए माने समस्त हेले मेसोजोइक पीरियड रे को पीरियड रहउचंदी मेसोजोइक मन रख मेसोजोइक एरा रे हमें तीनटा रहउचन दिस वन और दिस वन एट प्रेजेंट डे हला दिस इज योर प्रेजेंट डे कंटिनेंट दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ योर प्रेजेंट डे कंटिनेंट अरेंजमेंट आज रो जोटा तमे देखु सो वेगनर इत्ते बड़ सेही समय 1924 मसिया मान पाखापाखि आज की तांकर 100 वर्ष तले से गोटे बही रिलीज करथले निजर ही वाज रिलीज्ड वन बुक द कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशियन बेसिन्स सेथरे से प्रथम 1924 रे वेगनर रिलीज करथले कोटा 1924 रे इन 1924 his
his book Oceans and Continent Basins ହେଲା continents and ocean basins ei सब जिंस गुड़ा से कई लिखिथिले oceans and continent basins you know he had faced the severe criticism in the Berlin University then later on किंतु ता पर जेतले प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जेतले बाहरला वेगनर हैज गॉट ह्यूज सपोर्ट बट अनफॉर्चूनेटली से समय से ही वाज नॉट अलाइव एट दैट टाइम सो आगु के देखियो आ कोन कोन कहितले जेमते एटी देखिलो he was talking about the Pangaea and Panthalassa हैला then he was talking about the jigsaw fitting सेही समय देखो 100 वर्ष तळे से जिंसर कहते jigsaw fitting that South America once upon a time South America was attached to the Africa they are you know closely linked aji bhi jetale tamara your there is a geological when there is a geological taste of this Brazil coast with the Angola coast means I mean the Gulf of Guinea coast सेही समय से माने पाउछन yes it is there एठी Angola अछि Angola बेस एठी Brazil नो हैला एठी जदी Brazil देखछो एठी Gulf of Guinea अजीब मैचिंग कर सो वेगनर थ्योरी इज मच रेलेवेंट आगे देखिए आउ कोन कहितले वेगनर एटा भी कहितले कि देयर इज टॉकिंग अबाउट दिस यू नो सम लैंड योर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड योर फ्लावरिंग प्लांट माने देयर इज वन यू नो द वन प्लांट विद दैट नेम वाज ग्लॉसिपटेरस that one plant is there that is on glossipteris basically you know there is a fossil of the glossipteris continues एठी देखो glossipteris रो ऑस्ट्रेलिया रे भी तारो फॉसिल मिलला अंटार्कटिका रे भी मिलला इंडिया रे भी मिलला अफ्रीका रे भी मिलला साउथ अमेरिका रे भी मिलला नेक्स्ट एठी देखो जो गोटे Mesosaurus this is an this is an fresh water this is an one you know aquatic creature that also तार भी जदी फॉसिल्स मिलला कोठी साउथ अमेरिका रे मिलला प्लस अफ्रीका रे मिलला साइनोगैंथस दैट इज एन आल्सो इन ट्रियासिक पीरियड रे एटा देखा तो डायनासोर टाइप रो देखा तार जो फॉसिल्स भी साउथ अमेरिका रे अफ्रीका रे भी मिलला हाउ इट इज पॉसिबल ता माने माने जॉइंट ही थिले जदी मु कहबी कि साइनोगैंथस और मेसोसाउरस ए जिंसरा के वेगनर ए जिंसरा प्रूफ सेही समय देखैथिले बट ही वाज नॉट सपोर्टेड एट दैट टाइम इन द बर्लिन यूनिवर्सिटी राइट नेक्स्ट जदी मु देखिबी आमे देखिबा जदी अगेन ट्रियासिक पीरियड रे केनला लाइसोसारस गोटे लैंड बेयरिंग एनिमल तार फॉसिल्स अंटार्कटिका रे इंडिया रे आउ अफ्रीका रे भी मिलुतला सेम जिंस तमे देख तामे एठी कोन जानले आमे एठी ग्लॉसिपटेरस लाइसोसारस मेजोसारस एंड साइनोगैंथोपेथिस ए माने समस्त गोटे टाइप तांकर फॉसिल्स गुडा ए साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया रे से माने रेस्पेक्टिवली सब जगह रे मिलुथि ता रीजन ता माने once upon a time these land masses were clubbed together and these land creatures or your flowering plant they were bloomed in this one area and with the passage of time the continents were drifted during the Mesozoic era आउ कौन प्रूफ थिला कौन आउ कहितले जदी देखिबा हमें वेगनर एटा भी कहितले कि तमे जदी देखिबो कि ट्रॉपिकल वेजिटेशंस हैला ट्रॉपिकल वेजिटेशंस कथा कहले जदी मु कहबी ट्रॉपिकल वेजिटेशन वेगनर आल्सो टोल्ड अबाउट द ट्रॉपिकल वेजिटेशंस यू नो ट्रॉपिकल वेजिटेशंस वेगनर आल्सो टोल्ड दैट एटी मु लिखि दोउची कौन कहितले वेगनर आल्सो argued that tropical vegetation you know fossil remains koti found at Germany then Africa then your Paris ठीक अछि सो या भी कहितले कि ट्रॉपिकल वेजिटेशन भी तमर मिलुची कोथरे जर्मनी रे भी मिलुची नेदरलैंड रे भी मिलुची अफ्रीका रे मिलुची पेरिस रे मिलुची ता माने वंस अपॉन ए टाइम दे वर अटैच्ड विथ ईच अदर कहीं ना कहीं से जिंसटा सेठी तांकर केमति करथले वेगनर एमति न बसी के कहितले ही रोम अराउंड द कॉन्टिनेंट्स एंड ही फाउंड दोस right out of your you know your survey report or through practical experience he got the fossils next देखिबा कोन आउ कोन कहितले वेगनर एटा भी कहितले डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ग्लासियल फीचर्स वेगनर आल्सो कोन कहितले वेगनर आल्सो टॉक्ड अबाउट ओके हाइलाइट इट बेटर केमति लिखिबो हाइलाइटेड देखो ऑप्शनल लिखला बेले सब मन रखियो इन सेंटेंस में ये सेंटेंस हैज टू बी एनरिच यू कैन नॉट राइट एनीथिंग
तम से जो जेहेतु तुम ब्यूरोक्रेटिक एग्जाम लिखुछ योर सेंटेंस हैज टू बी एनरिच that is given edge to your mark. Let's highlighted Wegener also highlighted about the glaciations, the glacial evidence okay that occurred. केमती कौन कहते तुम जो देखियो आज का डेट रे कांगो बेसिन अर्जेंटीना आउ इंडिया रो किछि जिंस से मैच करछन कोड कहले मु अफ्रीका रो कांगो बेसिन, दिस इज योर कांगो बेसिन, देन योर अर्जेंटीना साउथ अमेरिका रे और इंडिया रे से कहउछन कि ग्लासियल एविडेंस भी देखा होछि कि सेम टाइप रो ग्लासिएशन से देखुछन माने केनिया रे जहा अर्जेंटीना रे से इंडिया रे से हाउ इट इज पॉसिबल ता माने वंस अपॉन ए टाइम अगेन दे वर क्लब टुगेदर. सो ए जो जिंस गुडा से जो कहले कि ग्लासिएशंस रो हैला ग्लासियल एविडेंस माने सेम टाइप सेम ग्लासियल erosion in South America रो अर्जेंटीना मु कहले अर्जेंटीना then your Congo basin in Africa and your India. Ta mane it is again evidence they were once upon a time they were clubbed together, right? Next, अच्छा और ये कौन कहते भी once upon a time से ये भी कहले कि the North Pole talk about the North Pole was at North Pole at your Greenland. Also, Wegener also argued that North Pole was at Greenland and South Pole at that time was Natal. Natal कोटी Natal सही समय थिला your Natal is a province in South Africa. मन रखो हला एटा के कहिथिले एटा आमे कहूनु एटा Wegener कहिथिले. Wegener also argued that 200 million years ago North Pole टा Greenland रे आउ South Pole टा थला Natal जोटा कि आजी कोठी होची South Pole टा अछि Antarctica रे, North Pole टा अछि तमर Arctic Sea पाखरे Russia पाखरे. That is what the major thing. Please note this one. Wegener was told कि North Pole टा सही समय 200 million years back the North Pole was at the Greenland and the South Pole was at the Natal province is your at the South Africa in today's South Africa. But आज का डेट रे हम जो देखो South Pole Antarctica रे अछि, North Pole अछि तमर Arctic Sea पाखरे. How it is possible? It is all possible because of the drifting of the continents. से भी कहते किंतु Wegener को काहे क्रिटिसिज्म मिलथिला म एठी कहूची Wegener को एथिमे क्रिटिसिज्म मिलथिला because Wegener एटा जस्टिफाई करि पार नथिले कि how the continents are moving, on what basis continents are moving. Wegener एटा कहते it is maybe because of the gravitational force of the sun and the moon, and maybe because of your equatorial attractions, okay, equatorial center माने gravity attractions आ गोटे हला तमरो your tidal force. तो but एटा भूल सेठी कोन हला जतले plate tectonics theory जतला आसिला से कहला no, continents are moving, it is because of the convectional current. Continents are moving, okay, continents are moving. एठी म आ गोटे नौचे आ गोटे पेपर रे अच्छा एठी जस्ट माउथ लिखुची. तो Plate tectonics theory कौन कहला? recent plate tectonics theory हला recent plate tectonics theory, okay, plate tectonics theory supported your Alfred Wegener's theory. How? कौन कहि कि Wegener's theory how it is केमती support कला? He said that yes, continents are drifting or moving, हला drifting माने हला moving, drifting or moving due to presence of molten magma हला
or that generates which generates convectional current, which generates convectional currents tak kuha jaye generates convectional current hala convectional current. That is what the possible that continents are moving. That is what the Wegener hypothesis, Wegener's theory was got support from the plate tectonic theory. जोटा कि Wegener ए जिनसा explain करि पान नथले, but ता छड़ा 90% Wegener जो कहथिले, whether it is an tropical vegetations जोटा कि तमे देखिला, whether it is an glaciation, whether it is an tropical your fossil fuels or the land or aquatic terrestrial animals like your Cynaganthropus, Mesosaurus, Glossopteris or your Lysosaurus, okay, or Lysosaurus एमाने समस्त एविडेंस देथिले या संग से जिक्सो फिटिंग सही समय कथा कहथिले कि you are matching about your continents, your South America and Congo basin, coast of Congo basins and the Brazil coast are matching. आज भी एठी जो मिलुची तमरो coal हला coal fossil fuels coals मिलुची हला ता संगरे एमाने matching होच, means I mean the carbon percentage what was there in this is Bahia Blanca that's in past in your present in the Uruguay and Argentina say coast sangre iti tomar Angola sangre match korchu. So much so much your resemblance similarity अछि ठीक अछि. So एठी हमें पढिले आज बहुत जिंस एंक ऊपर वेगनर्स को ऊपर about your Pangea Panthalassa हला your then your Gondwana land your Angara land and Gondwana land कौन कहितले what are Wegener hypothesis Wegener theory ऊपर जोटा कि very favored questions बहुत जगह तमे लिखिला बेले सबुटे now the question is that तमे लिखिला बेले मेंस रे केमते अप्रोच नबो हला ऑप्शनल रे that is more important बहुत जिंस इंपोर्टेंट अछि काहे एठी भी सेमती 250 वर्ड्स 300 वर्ड्स अछि. ज्योग्राफी रे मैपिंग डायग्राम इज वेरी नेसेसरी. क्लास रे जो भी जिंस तमे पढला बेले ई जिंस हम कहबे कि मैपिंग इज वेरी मच नेसेसरी विदाउट सी दिस इज एन एक्जेक्टली इट्स एन साइंटिफिक सब्जेक्ट एंड साइंटिफिक सब्जेक्ट रे छोटे छोटे डायग्राम एमती नो जो बहुत बड़ा रॉकेट साइंस. इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट. It is all about our mindset कि how we perceive the things. So एठी हम जदी छोटे छोटे डायग्राम करी नै पूरा डेफिनेटली मार्क आसीओ. आ ऑप्शनल रे हो कि जीएस रो ज्योग्राफी रे definitely marks is very necessary. Diagram is very necessary. Without diagram we cannot cut it. केबे भी तुम एक्सपेक्ट करिवनी कि तुम 20 रु जने 18 रखुची मोर मो देखैबे आगु को स्टूडेंट्स अछन जो माने गोटे टाइम रे 300 टू 200 प्लस स्कोर करथले हैला आज भी 170 प्लस करछन 250 रु का रीजन हैला कि प्रेजेंटेशन. ओके दैट इज द मेजर थिंग. अच्छा एटा हमें देखिले ता पूर्व मु कहबी कि हमर ऑप्शनल बैच जोटा अछि ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच both UPSC and OPSC ro editang batch UPSC ro offline batch has already started from last 3 years jota chalchi e barso continue. OPSC ro bhi chalchi online batch has already started few days back. Those who are interested they can number they can connect me over this number. ei number tame connect kari paribo 7978090972 hala ethre tame connect kar pa. It is also be this is also WhatsApp is there also. Any interested जो माने अच्छा कि नहीं definitely it's an scoring subject and we'll get in good direction. So definitely you can connect to me. Also जब मैं students मान कर देखियो these are the results of my students. They are mostly 400, 350, okay 350, 320. I mean maximum रखिजन even if I go for the rank good rank holder Taptiraj and yes Prabhu also. Okay top 10 top 15 में तो जो मान थिले. So JS ro batch we already also started heichi and also these are the successful candidates of this batch this year right Odisha Civil taraf ro. So anyone interested let's meet. Okay you can connect me again. I'm writing again you all can meet me on this number 79780909 and 972. You can connect. Okay connect me contact plus WhatsApp. Contact plus WhatsApp. You can go for WhatsApp for geo optional, for geography optional and plus GS जहाँ भी जोटा connect कर पारियो. Okay thank you so much. Thank you everyone. Yes Sanjit sir, I have appeared mains having geography optional twice but max code is 119 133 to low scoring in optional. What to do? अच्छा Ranjit had written that sir twice mains देछि but मोर 130 paper 2 रे आ इथरे 119 मार नियर अबाउट जदि हम कहबी कि 200 पाखा पाखी 200 250 अछि. डेफिनेटली Ranjit तमरा लेखारु माने पोटेंशियल जाना पड़छि कि you need and your solid guidance
कहीं 119 133 पेपर 2 रे माने एतेटा भी खराब स्कोर नो इट्स एन एवरेज स्कोर बट यार निश्चित रूपे आउरी मु कहबी कि यू हैव द पोटेंशियल टू इंक्रीज अनदर 50 मार्क्स इन बोथ द पेपर और एटलीस्ट 80 मार्क्स तमरा बढ़ी परियो आराम से बट ता पे प्रेजेंटेशन टा केमती हो डेफिनेटली यू कैन कनेक्ट मी ओवर दिस नंबर सो दैट गोटे ओवरऑल देखो सब बड़ जिनस है ना कि गोटे गाइडेंस कि गोटे गोटे ट्रेनिंग उपयुक्त गोटे माने जदि तमे सेही जिनसटा तमे पाइलो ट्रिक्स एंड ट्रेनिंग विथ प्रॉपर ट्रेनिंग हे परिबो ताले बिल्कुल निजे तो पढिले बहुत किछ हे परे किंतु जदि उचित मार्ग मिलुनी मींस आई मीन द प्रॉपर गाइडेंस मिलुनी देन वी कैन नॉट एनरिच आवर आंसर एनरिचमेंट पई बिल्कुल यू नो जदि मु कहबी कि फॉर एनरिचमेंट ओके फॉर एनरिचमेंट in score okay proper guidance is needed proper guidance is required this is an hardcore truth we have to accept that one हला एनरिचमेंट करिया पहले तुमको प्रॉपर गाइडेंस ता बहुत जरूरी बिना गाइडेंस रे बिल्कुल किछि भी होबन टू बी वेरी फ्रैंक दैट टू बी ऑप्शनल सब्जेक्ट जदि हम कहबा दिस आर यू नो ऑप्शनल सब्जेक्ट है एक्चुअली योर यू नो स्पेशल डोमेन तांकर रोटे स्पेसिफिक डोमेन थाय सब्जेक्ट ऊपर सो यू कैन नॉट से दैट वन डेफिनेटली जदि मुइना पेपर 2 कहि पेपर 2 रे यूपीएससी रे वर्तमान से माने मैपिंग पकोजन हां मो पाक गोटे इनसो कहि आसला माने मैपिंग इज कंपलसरी बिकॉज़ यू नो इफ यू डू नॉट नो हाउ टू ड्रॉ ए डायग्राम खाली मुइना कहबी कि ना खाली डायग्राम कले हबन जेंते रंजित क्वेश्चन कले खाली डायग्राम देले हबन डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग मन रखो डायग्राम विथ प्रॉपर लेबलिंग हैला लेबलिंग योर फेच गुड मार्क मन रखो फेच गुड मार्क्स ता माने कोन हो जदी तमरो डायग्राम करूचो फेच लाइन करचो देन भलो भाबरे लेबलिंग भी करूचो लेबलिंग देन यू विल तमे यू नो योर एठी जदी तमे देखियो जदी 10 मार्क्स अछि तमे डायग्राम करलो फॉर डायग्राम पई तमे डायग्राम पई दैट इज ना लॉट्स ऑफ 10 मार्क 2.5 ए जदी तमे लेबलिंग भले की करूचो हैला लेबलिंग ठीक अछि जस्ट मिनिट एठी तमे करूचो लेबलिंग हैला लेबलिंग करूचो ताहले तमे एठी आराम से तमे 2.5 रो 2.5 आराम से फॉर द डायग्राम पे पाइबा और जदी 20 मार्क्स रे तो पाखा पाखी 5 प्लस मार्क तमे डायग्राम पे थाय माने 4.5 रो 5 मार्क्स 4.5 रो 5 मार्क्स आराम से पाइबो सो जदी तमे भाबो गोटे क्वेश्चन रे तमे जदी अढे मार्क पाउचो ताले तमरो 10टा क्वेश्चन ने केतरा हला और टोटल पुनी 20 मार्किया क्वेश्चन अछि आराम से तमे एठु भाबो माने एठी तमरो हेगला पाखा पाखी 40 मार्क हला आ सेपटे हेगला तमरो पाखा पाखी 30 70 मार्क एठु जड़े देखा हेगला प्लस लेखिबार आउट के ट्यूनिंग डेफिनेटली 70 टू 90 मार्क्स निश्चित रूपे बढ़ी बरंती सो डोंट वरी फॉर दैट वन एंड दिस इज माय गारंटी दैट तमे जदी साइंटिफिकल वे रे प्रॉपर वे रे तमे करिवो डेफिनेटली इट विल वर्क आउट मैजिक डेफिनेटली मुना कोन कहली जेमते डायग्राम तमे करूचो 10 मार्क रो 2.5 मार्क हला डायग्राम थे 10 मार्क क्वेश्चन ऑप्शनल ले 20 मार्क के जदी क्वेश्चन अछि माने 15 मार्क रो हला 10 मार्क जदी 15 मार्क हला केते होबो ताले सेटा 3 रो 4 मार्क होबो ठीक अछि डायग्राम पे 20 मार्क के क्वेश्चन हला केते होबो पाखा पाखी 5 हला 5 प्लस रो मार्क तमे पाइबो जदी तमे डायग्राम विथ लेबलिंग तमे करूचो खाली एमते डायग्राम छाड़ मु कहली तमे इंडिया मैप तमे बनै दे ठीक अछि तर एठी मु डायग्राम कहली सपोज तमे डायग्राम करछो इंडिया रो तमे देखौची थर्ड डेजर्ट लेट्स से मु तमे एठी एनालिसिस करछि सपोज लेट्स से गो फॉर द थर्ड डेजर्ट राइट तमे एठी कोन लिखलो थर्ड डेजर्ट एमती डायग्राम बनेलो थेमेटिक मैप केमती बनेबो ठीक अछि एठी कहला पूरा दरकार नै करिवार एठी तमे देखैलो सो एई जगहटा तमे देखैलो थर्ड डेजर्ट दिस इज योर थर्ड डेजर्ट हला थर्ड डेजर्ट सपोज तमे मानसून ऊपर लिखुछो थर्ड डेजर्ट आ एठी तमे अरावली माउंटेन तमे करछो दिस इज योर अरावली ठीक है दिस इज योर तमे लिखला अरावली रेंजेस दिस इज एन कॉल्ड थेमेटिक मैप यू नीड नॉट टू ड्रॉ द होल इंडिया मैप सपोज तुम थर्ड डेजर्ट अरावली ऊपर थर्ड डेजर्ट ऊपर कोचो सो अरावली रे प्रेजेंस ता देखिया बहुत जरूरी काहे कि ना अरावली रे वेस्टर्न पार्ट रे हला वेस्ट जंग तमर अछि के वेस्ट पार्ट रे अछि तमर थर्ड डेजर्ट सो अरावली देख तमे इंप्रेशन क्रिएट कलो एठी तमने खाली एमती कर देला हबन दिस आर द सिंबल ऑफ माउंटेन मन रखो खाली एठी अरावली लिखला हबन माउंटेन रे सिंबल है ना ए बळे दिस इज योर माउंटेन सिंबल थर्ड डेजर्ट एठी लिखिन एटा मु काहे कहली नोडल पॉइंट दिस इज योर जैसलमेर एरिया बॉर्डरिंग एरिया दिस इज एपट हला तमरो दिस इज योर नेपाल मिडकंगल दिस इज योर भूटान दिस इज योर नेपाल एंड दिस इज योर भूटान सो डायग्राम कला बळे एमति नो जे हमें बहुत जण डायग्राम करंती पूरा में जंते अट्टा परोटा चेप्टा हे छि दैट इज नॉट कॉल्ड द डायग्राम सो साइंटिफिक वे रे करो तमे तुमको जदी सी
geography optional is an chocolate माने जदि मते कहबो मु कहले इट्स एन कैडबरी चॉकलेट बट कैडबरी चॉकलेट को बनिया पई भी टाइम लागियो एंड बट ता पई स्किल्स देखिबाटा हमको बहुत जरूरी हाउ टू स्किल्स केंति जानिबा दरकार सो कैडबरी जेंति तमे एटी कोन करे मोटी नेपाल बनेली भूटान बनेली तमे जदि खाली एमति गोटे इंडिया मैप टे एमति कर दो it doesn't matter, it doesn't have any sense, and if you argue that so I draw the map but I didn't get the marks, how come? This is completely disgusting and please accept that one कि आम्ही परीक्षा रे उचित मूल्य और उचित समय हमें दोनु डायग्राम को डायग्राम केते जण प्रैक्टिस करछो नोबडी प्रैक्टिस मु क्लास रे देखु छै ना हम जो आछन सो दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड साइंटिफिक अप्रोच और एटा बहुत इजी एक्चुअली सो एटा भी तमरी फॉल्ट बिकॉज़ प्रॉपर गाइडेंस ले जिंस डेफिनेटली है जो रंजीत सो देखले कि सर डेफिनेटली मोर एति की 250 अछि मु केमती करबी आराम से 90 मार्क्स 100 मार्क्स आराम से बढ़ियो इज इट रंजीत रंजीत लिखा सर अपन क्लास केते बड़ होउची टाइम देले जणंतु काइंडली शेयर द टाइम टेबल बिल्कुल बिल्कुल जंती जदी कहबी वीकली 4 डेज जब एटलीस्ट अछि 4 डेज एटलीस्ट आगु को सेटा आगु को बाहरी एनहांस हो टाइम टा 4 डेज रे बट 4 डेज रे दी दिन जदी तमरो वीकली माने अछि तमरो इवनिंग आ मॉर्निंग रे डिपेंडिंग ऑन द बिकॉज़ बहुत सारा वर्किंग प्रोफेशनल भी अछंती सो वर्किंग प्रोफेशनल मानन को ने की रिजेंट हेछि जो ऑनलाइन बैच टा ओके सो ये जो कनेक्शन ये जो नंबर देछि यू कैन कनेक्ट मी ओवर दिस नंबर आई विल टेल यू द डिटेल राइट सो एठी मु तुमको ए जिंसटा एबे कहली कि केमती रहिबो डायग्राम्स अच्छा डायग्राम करी कि तमे खाली हबन तमे प्रॉपर लेबलिंग करिवो थर्ड डे तमे दि खाली लिखि दबो एमती कर दबो तमे दि लिखिबोनी थर्ड डे तमे दि लिखिबोनी अरावल रेंज वेस्टर्न पार्ट केमती काहे कि दबो सो ए भले जदि तुम अरेंज करूछो ताले तुमको डायग्राम रे तुम जणो को तुमको आराम रे 5 रो 5 दबो जदि 20 मार्क अछि इफ इट इज द क्वेश्चन इज 20 मार्क्स एंड दे आर आस्किंग व्हाई द रीजंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड डेजर्ट तो डेफिनेटली तुमको मिलेबो 5 रो 5 तुम जदि डायग्राम करूछो आ परीक्षा हॉल रे एटा भी ट्रिक सपोज घंटी बाजिया टाइम हे गेला नाही तुम हटात देखु चाउ 2 मिनिट अछि फटाफट फटाफट डायग्राम कर दो एटलीस्ट तुमको 4 मार्क 5 मार्क मिलियो पिला 2 मार्क गोटे मार्क रो कटि होचन मेंस रे so there is an tricks खाली लिखिले हबनी आ साइंटिफिक सब्जेक्ट रे ऑप्शनल तमरो मेन हला स्कोरिंग बट ताकू जानिबा दरकार मु कोन कहली परीक्षा लास्ट 2 मिनिट बेल बजे तमपर समय ने तुम लिखि परनो चट किना माइंड रे आसला यस मु डायग्राम टा बनि दे डायग्राम फटाफट लिखबे कर 2 मिनिट आराम से जो फटाफट फटाफट प्रैक्टिस कर आराम से 5 मार्क तुम 4 मार्क पाए आ 4 मार्क बहुत हलानी बिलीव मी दैट ओके ठीक अछि सो अगेन मु कहबे जो भी जहार भी जो जिंस रिक्वायर्ड अछि डेफिनेटली कांटेक्ट करबे जीएस बैच अगेन भी ऑप्शनल हो जीएस हो एवरीथिंग वाज स्टार्टेड ठीक अछि सबुड बड़ जिंस नो क्वालिटी एजुकेशन वी कैन नॉट सबले कंप्लेनिंग ने रे हबनी मु कर देतली नो आमे केबे सफिशिएंट नो आमे निजो केटा भाबीबा नाही हम पाखरे बहुत जिंस अछि करिबार आई हैव टू लर्न ए लॉट ठीक अछि सो अगेन सो पुणी अगेन आउरी गोटे पुणी आसीबा पुणी गोटे न्यू टॉपिक रे आसीबी जेमति आज कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी नेली नेक्स्ट पुणी मु नेक्स्ट वीक रे आ गोटे पुणी सब्जेक्ट नेकी आसीबी हैला ऑप्शनल ले नेकी सो थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन ओके ओके ठीक अछि ओके थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीवन Thank you so much. Thank you, everyone. Have a good day. Thank you. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Take care. Thank you. Thank you so much.